you a small insight. As we all know, he's been working since several decades in our film industries and is a very accomplished actor. And also he is the brand ambassador of NADA, that is the National Anti-Doping Agency. He's also the brand ambassador of MMA India. He also works with the foundation that is Save the Children. And he also is an active participant for the cause of women trafficking and children education. Ladies and gentlemen, can we all welcome on stage Mr. Suniel Shetty, sir. Bollywood, films, drugs, आसानी से लोग कह देते हैं कि फिल्मों से जुड़े हो तो आप ड्रग से जुड़े हो, क्योंकि फिल्मों में ये दिखाया जाता है और फिल्मों में ये होता है। और हमारा मानना है कि फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर होके वो कहानियाँ कहने की कोशिश करती है। मीडिया में सारे मीडिया वालों को नहीं ब्लेम करता हूँ, लेकिन उनको भी नशा है टीआरपी का, उसका क्या करें। जैसे आपने कहा, अगर सही तरीके से दिखाया जाए, it changes everything. You know, यहाँ से मैं शायद एक गेस्ट की तरह आया हूँ और I didn't enjoy myself on that seat out there. मेरे दोस्त राजेश जी के साथ, you know, with the entire team of the Central Bureau of Narcotics, as compared to sitting there and listening. जहाँ कहानी एक ही है, दुश्मन हमारा एक ही है, the trafficking that is going on. संजय जी से मेरी बात हो रही थी, you know, Deputy Commissioner Narcotics, और उनका कहना ये था कि इसमें पहले किलोज में ड्रग्स आता है, अब टन्स में आता है। That is our problem. It's our country's problem. Whether it's the media, whether it's actors, we all have to get together and stop that bloody trafficking that is happening. Not the consumption. Consumption हमारा अपना है, हमारे ही बच्चे हैं, तो उन्हें कैसे देखें हम? क्रिमिनल के तौर पे, ट्रैफिकर के तौर पे नहीं। Like Dr. Sarika said, and she said it so beautifully, ma'am. Hats off. Without using tones that impact people, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से सबको समझाया कि what is important, कि हर एक को, चाहे 60 साल का हो, एक बच्चे की तरह देखना जरूरी है। बच्चा जब गिरता, आपने वही एग्जाम्पल दिया कि बच्चा गिरता, हम हाथ पकड़ के उसे उठा लेते हैं। लेकिन अगर बॉलीवुड एक गलती करती है तो बोलते हैं कि चोर है, डकैत है, सब ड्रग एडिक्ट्स है। नहीं, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में, और 300 दोस्त हैं मेरे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं है। Like you said, the gateway, yes, that gateway has to stop there. So let's all get together today. I think it's an eye opener. Rajji, I think one of the best workshops that I've ever attended, which is our country's problem, that we need to come together to stop trafficking. अगर आपको दिखाई दे कि कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, लटकाओ उसे, फांसी पर चढ़ा दो, मैं बोलता हूँ, and that's the only answer. लेकिन अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, तो उसे बच्चे की तरह देख के उसे सुधारने की हम कोशिश करें. I think that's what is required. एक हीरो बनने के लिए हेरोइन की जरूरत नहीं है, हीरोइन की जरूरत है, लेकिन मीडिया उसे हेरोइन बना देती है. You know, so let's the media and us get together and look at every industry with a lot of love, lot of respect, because उतनी contribution है हमारी. Good or evil is the only thing that we ever say, and we time and again say it. आज एक क्रिकेटर खेलता नहीं है, हम बोल देते उसको निकाल देना चाहिए. ये नहीं देखते कि वही क्रिकेटर कैंसर से अभी निकल के आया. I'm talking about युवराज सिंह. Why are we so judgmental? I think if the media becomes responsible, जो हम कंज्यूम करते हैं, मीडिया को जिस तरीके से सुनते हैं, देखते हैं, अगर वो हमारी वो सोच भी चेंज हो जाए और हम बार बार ट्विटर लेके किसी की बैंड बजाने नहीं निकले. I use the word बैंड बजाना क्योंकि वैसे ही है ट्रोलिंग, लेकिन एक अलग नजरिए से देखे, आई थिंक बहुत कुछ बदल सकता है. तो आई थिंक I pledge, you know, my complete support, Sanjay, to you, Rajesh ji, the entire bureau. If you need me 24/7, 365 days a year, Suniel Shetty is available, and let me trust you and trust me on behalf of the entire industry. And I'm not just saying Hindi film industry, I'm saying the Indian film industry.
each one of us will come forward to do that. Because हमारे घर में भी बच्चे हैं. How we conduct ourselves at home is how the children will conduct themselves. हम ड्रग की बात करते, सिगरेट छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, अगर कंज्यूम कर रहे हो तो अपने दोस्तों के बीच में, बच्चों के सामने आप कंज्यूम करोगे तो उनको लगेगा ये अच्छा ही है. Everything is good for them because Papa is doing it, because Mama is doing it, because Bhaiya is doing it, you know, because Didi is doing it. So I think these are the little things that we need to be aware of. Rather than pointing fingers, we need to point off. So the best thing is get them involved in sport, get them involved in a team sport, because it is better to stay off drugs. Then it's easier to stay away from drugs than to stay off drugs or get off drugs. So ये छोटी छोटी चीजें, you know, let's work on all that. Once again, thank you for inviting me here. And no, Bollywood is not filled with druggies. गलतियां हम करते, उन्हें भी बच्चों की तरह देख के माफ कीजिएगा. हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, हैशटैग बॉलीवुड ड्रगीज, वैसा है नहीं. हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, 90% जो बच्चे हैं अच्छे इंटेंशन से आते हैं छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से, ये सोच के मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा. अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लॉइट होते, पहले फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होते, फिर फिजिकली एक्सप्लॉइट होते, उसके बाद मेंटली एक्सप्लॉइट होते, उसके बाद दिस इज द ओनली ऑप्शन. डॉक्टर सारिका said be prostitution, could be anything. So let's get together and save them out of all this, rather than see them in that situation और उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाए कि वो दोबारा कभी उठ नहीं सकते. So give us a chance to stand up and give our best, because we're all very proud Indians, very 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 proud Indians, and every film will depict that. We have also represented our country all over the world. आज अगर दुनिया में लोग जानते हैं इंडिया को, तो बॉलीवुड एक छोटा सा हिस्सा उसका भी है. So all my friends from the media here, please, we are at our worst. We need your support and people's support. Believe in us. We can make a difference. Thank you. Thank you, sir, for this lovely note. And as sir has rightly said, let's not judge one another. Let's not put someone down, because the more we judge, the more time, the more physical effort, mental effort that person takes to come out from. एक हाई एक्शन ड्रामा हुआ था एक महीने पर, काफ़ी चीज़ें चली थी जहाँ पर स्टार किड्स बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया था, और जैसे अभी तो उनको बरी कर दिया 1 महीना, लेकिन एक हाई ड्रामा चला था. तो ऐसे केसेस में हम क्या मेजर्स लेते हैं, बिकॉज 1 महीना इज़ टू मच. बहुत किसी की ज़िंदगी के अंदर बहुत फ़र्क पड़ सकता है, स्पेशली एक यंग किड हो तो ऐसे में व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट ऑल्सो कि ऐसी चीज़ें ना हो, बिकॉज ये आई डोंट नो एक बहुत ही लोगों के दिमाग में एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट भी पड़ा था. आई डोंट नो लाइक व्हाट हैव इसके बारे में कैसे क्या कहा जाए. तो सुनील अन्ना, आपसे, बिकॉज यू रिप्रेजेंट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, आपसे कुछ जानना चाहूँगा. राजेश जी, आपसे कुछ जानना चाहूँगा इस बारे में. I think past is history and let it be bygones. आज efforts है, सारे लोग यहाँ हैं, एक कोशिश है कि एक वर्कशॉप किया जाए ताकि हमारे भी राइट्स के बारे में हमें पता चले, एक क्रिमिनल और एक विक्टिम के बारे में पता चले. तो आई थिंक वो मेजर्स हो ही रहे और कोशिश इसलिए आई थिंक ये एक वर्कशॉप है राजेश जी और पूरी टीम की तरफ से कि एक वर्कशॉप है एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तब मीडिया की भी थी, हमारी भी थी एज एन इंडस्ट्री, और साथ साथ डिपार्टमेंट की है. लाइक आई सेड अर्लियर, द प्रॉब्लम इज द कंट्रीज प्रॉब्लम. आपकी, मेरी, डिपार्टमेंट की, लोगों की, मीडिया की नहीं है. इट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग
drugs that is coming into the country, which is the biggest problem. So I think घर से अगर हम शुरुआत करें and try to improve things, it will make a big difference. या राजेश, आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? दरअसल ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत ट्रायल चलती है, और उस ट्रायल में जैसा इन्फोर्समेंट एजेंसी है और कोर्ट्स है वो कानून के हिसाब से काम करते हैं। तो जो भी आपने उस वक्त देखा होगा वो कानून के हिसाब से ही काम चल रहा था, और उस वक्त जुडिशरी को जो भी मुनासिब लगा, जो सच लगा, उसके हिसाब से उन्होंने वो कार्रवाई की थी। और उसके बाद उस इंसिडेंट्स के बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ी हलचल ज़रूर मची है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल कंज्यूमर एंड अ ट्रैफिकर। तो थोड़ी लॉ साइड भी कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आज नहीं बता सकता हूँ, बट देयर इज सर्टेनली थॉट एंड टॉक ऑन हाउ टू डिफरेंशिएट। तो आप देखेंगे कि आगे के समय पे हो सकता है कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव इस कानून में भी आए। थैंक यू। So I'm Roxana from Star Friday. I'm staying in Villepalli West. That's West I'm telling you specifically because near the station there are paddlers. And it's very fearing, like for kids to, they're just saying, the police is taking the action and all this. What awareness of the workshop you're doing, it's a very good initiative and very good cause. So I just want to know that how can, like they're going, police is taking the action, and after 2-3 days you see them again they are there. And for us, like it's scary to go on the bridge also for me sometimes. So I would, it is a request, or I would say, can you do something? It is really scary for our kids also. Our kids are also passing. They are school students, college students. So I would like to request, do anything for that area. Noted. I'm staying over there. That is so. No, it is not about only your area. There are so many areas where hidden things keep on going, and now it is to be managed at a macro level. But we'll certainly, because that's why we have done this workshop at Mumbai, because Mumbai has a lot of challenges and threats also. मराठी बोलते हैं प्रादुर्भाव, इथे प्रादुर्भाव फार जास्त आहे. So we'll take up this matter with the local administration also, and we'll come with them later. Thank you. Hello, so here Mayura. Yeah, I have a question. Like when we talk about consumption of drugs, तो कोशिश ये होती है कि बचपन से ही उनको इतना पक्का बना दिया जाए कि वो इस बारे में सोचे ना. So like we say कि sex education ज़रूरी है स्कूल में, या फिर gender sensitization ज़रूरी है स्कूल में. Are we also thinking about sensitization or awareness regarding drugs with school children? Is there any provision to have such courses or like maybe compulsory optional? अभी इतना तो नहीं सोचा, लेकिन क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है कि स्कूल में करिकुलम के साथ में ही ऐसे टॉपिक्स को भी लिया जा सके? थैंक यू. This is a very good suggestion. I think this can be taken up. अभी जैसा मैंने कहा कि एक हलचल, एक काफ़ी इसमें मूवमेंट्स है इस विषय पे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो मस्ट बी थिंकिंग टू इंक्लूड सम जनरल काइंड ऑफ टॉपिक. बट क्योंकि एजुकेशन में जो भी घातक विघातक परिणाम वाले चीज़ें हैं जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह आती हैं, तो ज़रूर उसका प्रभाव अच्छा पड़ सकता है. आई थिंक यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस. या Mayura, Mr. Rajiv Nivatkar, who is a collector of Mumbai, is doing an excellent job. He in this Nasha Mukta Bharat Abhiyan, which is for the Mumbai district, what he did on the first meeting itself is he invited the education department, and I think Nasha Mukta Bharat Abhiyan has a provision where the schools are to be incorporated. The education department, the colleges, the universities are to be incorporated. There will be local groups of the children and the guides.
they guide. The guides can be the teachers or the parents also. And such local groups are to be trained. They are called the volunteers of Nasha Mukta Bharat, and they will be training the further people. So such training have happened in Mumbai district, and the school and colleges program, the NCC is involved. The NSS is involved, not the NCC. And the programs are conducted at various level. Because it started in pandemic, I myself have conducted a lot of online programs for the school children. And of course we do it through our department, like the Addiction Center. But yes, Nasha Mukta Bharat Abhiyan has given a push to it. And most of the schools are conducting it. Or it is almost made compulsory that every school should have one such program, and they are supposed to post it and inform the education department they have done it. So I would say it has started. And one more thing I would like to add, which was for the previous question, this Gav Tithe Manasopchar, this drive is going to go for the entire western zone of India, which includes Maharashtra, Goa and Gujarat. So in all these three states, mental health professionals, especially the psychiatrists, have gathered together, and they will be doing the drive so that we reach to as many homes or as many societies or as many people possible, so that victims are not targeted as bad people and they are looked upon as patients. Thank you. Thank you. Thank you. Good afternoon, all of you. Sir, all of you. One minute. Drug abuse is increasing in our country, especially among the youth, and this is a matter of concern. I pledge that I will cooperate in stopping the drug abuse. I promise that I will not consume any harmful or illegal drug in any way for any purpose. I will create awareness about the ill effect of drug abuse by encouraging every person, especially the youth, so that the youth of India can live drug free and they can become creative and important member of the society. Thank you.